J. Sai Deepak on Decoloniality, Victimhood, Nationalism and Hindutva. ऐसे ही आप डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, डीकोलोनियलिटी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हम थोड़ा रिग्रेसिव हुआ है, but the fact of the matter is identity still remains relevant when it comes to Ukraine, when it comes to Russia, when it comes to the global stage today. The West is very very clear that it is seeing a certain assault. राजपथ को कर्तव्य पथ कर दीजिए, औरंगजेब का जो नाम है रोड के ऊपर, रोड औरंगजेब का नाम बदल दीजिए। कोई औरंगजेब का समर्थक नहीं है, लेकिन औरंगजेब का पन्ना आप इतिहास से नहीं निकाल। कल्पना करिए 1947 के बाद जब नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने और जब उन्होंने भी ये सोचा होता कि चलो चुपचाप टोटल फोकस करते हैं मंदिरों के विकास पे, तो कभी आप सैटेलाइट बना सकते थे, कभी आप रॉकेट बना सकते थे, कभी आप मंगल पे भेज सकते थे अपना सैटेलाइट, कभी चंद्रयान भेज सकते थे। तो उन्होंने एक साइंटिफिक टेम्पर की बात की। साइंटिफिक टेम्पर मतलब कॉलोनियल माइंडसेट नहीं हुआ, साइंटिफिक टेम्पर मतलब एक प्रोग्रेसिव अप्रोच हुआ। बट नेहरू जी वाज नेवर अगेंस्ट एनी टेम्पल, नेहरू जी नेवर ऑर्डर्ड पुलिस टू डिमोलिश टेम्पल। तो अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, तो ये सरकार की अगर प्रायोरिटी है तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एम्स तो नेहरू जी ने बना के दिया आपको, उस एम्स का जितना विस्तार कर सकते हैं करिए, हम इसका स्वागत करेंगे। जितने हॉस्पिटल, जितने स्कूल बनाना चाहे बनाइए आप, जितने रोड बनाना चाहे बनाइए, जितने पुल बनाना चाहिए बनाइए, वर्ल्ड क्लास पुल बना के दीजिए आप हमको, अच्छे रेलवे बना के दीजिए हमको। अंग्रेजों ने हमको ट्रेन किया। अब जो बार बार मानसिक दास्ता की बात होती है, मैं एक दो बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। पूरा जो सिविलाइजेशन डेवलप होता है ना, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये लोग दोनों लोग हिस्टोरियन है, लोग बता सकते हैं, एक दिन में नहीं बनता कुछ। और जब एक सिविलाइजेशन का जब डेवलपमेंट होता है, जब सभ्यता का विकास होता है, आती जाती हैं, उसको हम आप जब कहेंगे कि नहीं मानसिक दास्ता से बाहर निकलना है, तो जो बाहर से आई हुई चीज उसको बाहर निकाल दो। संभव है? करी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे मशहूर भोजन है, उसको निकाल देंगे क्या? वो हमारा नहीं है, मुगल लेके आए। नहीं, लेकिन एक तरफ हम बात कर रहे हैं योग की। इनवाइट किया है, that has become a part of Indian civilization. That was never existed in हड़प्पन civilization, या वैदिक पीरियड में भी नहीं था, लेकिन आज वो इंडियन सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। उसको ये नहीं कह सकते कि मुगल दास्ता का एक प्रतीक है, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। आप इंडिया गेट तोड़ नहीं सकते, आप गेट ऑफ इंडिया तोड़ नहीं सकते, हालांकि वो एक अंग्रेज राजा के सम्मान में बनाया गया था। साई आपको फिर उत्तर देना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ बात हो रही है योग को, जो भारत की देन है पूरे विश्व को, उसको और फैलाया जाए। मैं सुन नहीं पा रहा हूं बहुत ज्यादा, या तो पता नहीं। My response to Sai wants to respond. my response to I think there's a lot of echo, that's why. I think one of the things that Mr. Sanjay Nirupam will have to consider is, in stark contrast to the confidence with which the current dispensation is embracing its civilization, Pandit Jawaharlal Nehru had a serious problem with the reopening of the Somnath temple. That is a question that needs to be addressed. Yeah, exactly. On the one hand, Dr. Menon says that we must respect our past, but it seems that in our own heads we have certain cutoff points. Until what point can the past be respected? If it happens to be until the Mughal past, it is certainly worthy of discussion. But if there is a discussion with respect to the pre-colonial, pre-Mughal, pre-Islamic period of Bharat, that discussion effectively enters the realm of Hindutva for some weird reason. Yeah. It's almost as if we are being told that thus far and no further, any discussion with respect to Bharat's history that speaks of a period which did not have a Christian presence or a Muslim presence is certainly not acceptable as far as Bharat's current public discourse is concerned, because somehow it militates the concept of secularism. Yeah. Let me also make this point. When we speak of a civilization narrative forward, and when we speak of a decolonial way forward, it does not speak of removal of certain episodes from Bharat's history. It actually says that the whitewashing and the distortion that these periods of history have been subjected to over the last 60, 70 years, it needs to be reset, and there needs to be a certain degree of balance as far as these discussions are concerned. But even then, when the discussion starts, you're being accused of saffronization because you're not allowed to present those facts. So it appears that our approach to past and civilization is particularly selective depending on the vichardhara or the ideological camps that we are all placed in. So these cut-off periods is what I think the discussion is on. Professor Menon and Sanjay Nirupam wants to respond. Sanjay जी, बात ये हो रही है कि भारत का सदियों पुराना इतिहास है, हजारों वर्ष पुरानी हम सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो अभी भी जीवित है और प्रगति कर रही है। हमारा इतिहास न केवल 200 साल अंग्रेजों का है, न उससे पहले 800 साल जो आतताई हमारे देश पर आते गए, आक्रमण करते गए, बन के यहां रह गए, कुछ चले गए, ऐसा इतिहास नहीं है। हम अपनी पुरानी सभ्यता पर बात करने से क्या घबराते हैं? नहीं, कभी नहीं घबराते, और घबराना भी नहीं चाहिए।
हम 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन के हिस्सा हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बार बार एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि साहब हम खतरे में हैं, हम बर्बाद, अरे यहां शक आए, कुषाण आए, हूण आए, टर्क्स आए, पूरा आप स्लीव जो डायनेस्टी का राज चला इंडिया के ऊपर, मुगल्स आए, उससे पहले लोधी आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, हिंदू धर्म का तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हमारा इतिहास उससे और कि मेजोरिटी खतरे में है, आमतौर पर माइनॉरिटी खतरे में होता है हर जगह। 5000 साल में हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ेगा? आगे भी कभी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन इतना डीप रूटेड है, वो कभी उसको कोई उखाड़ ही नहीं सकता। हम अपने जड़ों तक जा सकते हैं, लेकिन उन जड़ों को उखाड़ने के चक्कर में नहीं, क्या जड़ों को और मजबूत करने की आवश्यकता है? यही तो बात इस समय बहुत अच्छी बात है। जड़ों को मजबूत करने के लिए हिंदी लैंग्वेज है, सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत है, लेकिन अब कहेंगे कि नहीं हिंदी और मराठी गुजराती सब छोड़ के चलो वापस संस्कृत में। अब पाणिनि ने तो संस्कृत के बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, क्या जरूरी है कि आज हम पढ़ करके उसके जरिए चले? हाँ, पुष्पक विमान पे में गर्व होता है, लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी के जरिए हम कोई विमान बना सकते हैं आज? अब पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन ओके प्रोफेसर मेरिन, यू वांटेड टू कम इन सर। I think the discussion was on the physical. We talk about development. The question I want to ask is modernity a Western tradition? Can we imagine modernity to be evolved from our own roots? That is the crux of the problem. So, of course, no one is ashamed of our past, but we are not able to develop a modernity that's based on our past. We are always trying to appropriate someone else's modernity and make it Indian. It's just like, if I might make a very crass example, get a Western woman, make her wear a sari and say she's Indian. That's what we're doing to our cities. Our cities are ancient cities, are historic cities. We garb it in a Western garb and call it modern. Absurd, you know. Why can't we develop a modernity that evolves from, shall we say, the Varanasi traditions? Why do we have to break it down and make it something like, you know, really a mall, a modern mall? Okay, and then call it a modern Banaras. But, you know, aren't we going back to our roots, Sai, which actually predates both the British and the invaders? We are going back. Is that what you? Is that your point in decolonization? No one is saying going back. Not at all. And I think on this particular point, I certainly agree with Dr. Menon. But before that, let me just express my disagreement with Mr. Sanjay Nirupam in the first place, because he seems to be making the point that a majority, by sheer virtue of being in a greater numerical, let's say, proportion, so to speak, in the population, loses the right to call itself a victim altogether. Going by this logic, practically every colonized society must give up the right of being a victim, because even if you look at South Africa, the Africans were supposed to be in larger number, the ones who were ruling them, the whites, were in smaller number. Even as far as India is concerned, what was the population of the British when they left this country at the peak of their powers? It was not more than 1 million. And we were still 30 crores when they left this particular country. Does this mean that we never suffered colonization at all? So I don't think it's a question of numbers. If you look at global history, the fact of the matter is, it's not numbers that ultimately makes a difference, but it is intent and concerted effort that gives you access to power. Otherwise, going by that particular logic, shall we apply the very same logic to the caste discussion in this country? And the communities that are constantly accused of actually wielding power are always the micro-minority, regardless of whichever phase of history you're looking at. So how does that particular logic play itself out in the caste equation? That's point number one. Point number two, the agreement that I have with Dr. Menon is complete as far as the point that he's just made. Literature on the subject clearly tells you that modernity has been equated with westernization for the better part of the world's history. It is only after all these formerly colonized societies have started asserting themselves and have started regaining access to their own roots that modernity has started acquiring a certain hybrid shape, because now the definition of modernity is not dictated from one side of the Atlantic, and it's not dictated by one particular community, so to speak. More people have started contributing to it. The one thing that India, whenever we speak of decolonization, never looks at, the one direction that we never look at, and that's perhaps the most important direction we should be looking at, is that the voices which are asking for a decolonial access to the past are actually African in nature and Latin American in nature. We constantly seem to be looking at the West and Europe when it comes to decolonization.
You're looking at the colonizer's territory to understand what is decolonization, as opposed to looking at former colonies to see what is it that they're doing right. Okay.